the mistakes that you should not do is that you do not make notes. You just copy or take some topaz notes and start reading them only. You have to make your own notes for mains. When I said earlier that I did not make notes, that was just for prelims. For mains, you definitely have to make notes on each and every topic of the syllabus, on each and every theme that is asked in the PYQs. So that is very important. Plus, write answers. So the only mantra that I have cracked for this exam is make notes, revise, write answers, and repeat. And my colleagues will agree with this, that this is the only mantra. Nothing else will work if you follow this regularly, repeatedly. So this will definitely work. So don't err on any of these steps that you have do not have notes, or you do not revise them, or you do not write answers. You have to equally do all three of them repeatedly. So that is needed to clear this exam. And coming to the first question, the feeling. So it is a feeling of relief. It is a feeling of dream come true. I had a quote written on my study table that I have a dream and I'll achieve it. So now I have written beneath it achieved. So that is sort of feeling, because this exam, these services, like we used to, coming from a middle class background, it felt like almost unachievable thing. We were not aware. I was not aware till second year of my college, like the process of this exam, what are the stages, and how to reach there. I just had heard like IAS, IPS. That's it. The pattern was not known. But from there to achieving it, so that is a feeling that is like unmatchable. Plus the feeling of seeing happiness on your parents' face, so that is unmatchable. So plus again responsibility is also there now. I feel वो जब sink in होता है उसके बाद अभी training start हो गई, and then again responsibilities will arise because of the very responsible position we will be getting. So अभी उस तरफ transition हो रहा है. So उस feeling के बाद अभी ये transition हो रहा है. अभी ये ट्रांजिशन तो सबका बाकी है. Like from being a student to becoming administrators is another journey of life that I think every one of us is looking forward for. And I think just adding to one more point, that the only difference that I had from the previous attempts to this was extensive answer writing. Extensive answer writing and getting it peer reviewed with my study partner. I used to, in fact, that I think made the difference in this attempt for me. Same for me. Like this year, I wrote daily answer writing in the morning, a 3-hour test, be it PYQ, be it a test series I had taken. I wrote around 45 tests, 45 to 50 tests of GS as well as optional. But I did daily answer writing in the morning till 4 to 5 days before exam. So that made a difference. Yeah. Likewise, I also did the same thing, but my approach was slightly different. The essence is same. I used to practice with previous year questions, and what I used to do is that I used to analyze my answers myself. This year, this is something that I did this year. Earlier, I used to get it analyzed by either by coaching institutes or by my peers. But this year, what I decided ki just as we do with prelims test series, कि we write a test for 2 hours and then we sit down with the paper, we see कि हमने कहाँ गलती करी है, 2 घंटे 3 घंटे हम उसमें देते हैं. But this is something that many of us do not do with our mains paper, कि हमने देख लिया कि एग्जामिनर ने चेक करके दिया और उसने मुझे किसी क्वेश्चन में 4 नंबर दे दिए, तो we do not go too deep into it कि मैंने क्या गलत करा है इसमें या कैसा ही करा. एग्जामिनर के कमेंट्स देखे ओवरऑल एक लाइक 15-20 मिनट्स में हमने उसके कमेंट्स पढ़े एंड दैट्स इट. बट आई थिंक दिस ईयर व्हाट आई डिड कि मैं लाइक I did not take those comments too seriously. मैंने खुद से अपनी कॉपी को एनालाइज करना स्टार्ट करा कि इस आंसर में मैं और क्या बेटर लिख सकता था, इंट्रोडक्शन में मैं और किस बेटर तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकता था, मैं बॉडी में मैं और क्या पॉइंट्स और क्या डिमेंशंस ला सकता था, वट एवर मतलब वेदर आई वॉज इंक्लूडिंग द एलिमेंट्स दैट मेक्स एन आंसर अ गुड आंसर और नॉट. और इन फ्यू क्वेश्चंस आई कुड नॉट डू दिस विद ऑल द क्वेश्चंस, बट इन सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हाट आई यूज्ड टू डू कि एक मेंटल मैप बन गया कि a good answer of this particular question would be in such and such way. तो मैं उस आंसर को दोबारा लिखता था. And I used to do this exercise for I think by the end of it I would have done it for almost every topic, for one question on every topic. So what this did in my case is कि when I sat in the examination this year, I felt a completely different attitude towards the question. Earlier मेरा जो गोल रहता था वो कि अरे क्वेश्चन आया 3 घंटे बचे हैं 7 मिनट में एक क्वेश्चन लिखना है, and I would just blurt out everything I know on the paper, obviously in a structured fashion, but
my focus was to complete the paper. But this year what I felt ki because of the exercise that I did कि I tried to make my answers more enriched, more better. तो इस बार एग्जाम में बैठते टाइम में मुझे उस 7 मिनट में along with the कंसर्न फॉर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन इन टाइमली फैशन, तो एक दिमाग में ये रहता था कि नहीं इस आंसर मुझे ये भी इंक्लूड करना है, ये भी इंक्लूड करना है. आई हैव ऑल्सो नीड टू इंक्लूड एग्जाम्पल्स, आई ऑल्सो नीड टू इंक्लूड कोड्स, डायग्राम्स, फिगर्स. तो वो सारी दिस इज द चेंज दैट आई नोटिस्ड दिस ईयर. और आई थिंक कि वो एनालिसिस वाला जो पार्ट है, इफ वी ऐड विद इन दैट मंत्रा, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट कैन ऑल्सो हेल्प. डेफिनेटली आई ऑल्सो डिड द सेम थिंग दिस ईयर. मैं तो एक रेड पेन लेके आया था और मैं खुद को इवेल्यूएट भी करता था, मार्क्स भी देता था. एंड आई यूज टू लाइक इवेल्यूएट माई सेल्फ कि हाँ, प्लस मैं उसको नोट्स के साथ भी मैप करता था कि हाँ उसके साथ ये एग्जाम्पल मैंने ऐड करी कि नहीं, क्योंकि ये जो हमारे नोट्स में से अगर हम टेस्ट में वो ऐड करते हैं चीज़ तो वो और बेटर हो जाता है रेप्लिकेट करना एग्जाम में, नहीं तो वो सिर्फ नोट्स में ही रह जाती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो नोट्स से पहले टेस्ट में आए, जो भी आंसर राइटिंग करो उसमें, एंड देन वो एग्जाम में और बेटर आती है. सेल्फ इवेल्यूएशन अलॉन्ग विद पीयर इवेल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. In fact, I made model answers out of my own answers, theme based actually. And exam के 1 week पहले मैं बस वही लेके बैठ गया था. मेंस के लिए बस उतने ही model answers on themes पढ़ के एग्जाम हॉल में गया. I could replicate almost everything that I had already practiced आराम से बैठ के in my library. So that made a difference in my mains marks also. So I think having model answers based on your themes and theme based notes, I think will help any aspirant score brilliantly in their mains preparation. जी, तो तैयारी करते जाइए पर साथ ही में अपने आप को इवैल्यूएट करते जाइए. इसी के साथ आज हम अपना ये डिस्कशन, हम ये सेशन एंड करते हैं यहीं पे. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना समय निकाला, यहाँ पे आप आए. और थैंक यू सो मच फॉर अवर ऑडियंस, टू अवर ऑडियंस एज वेल. आप लोग आए यहाँ पे, अपने समय निकाला. थैंक यू सो मच. बाय बाय.